सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में अभिनंदन है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम प्लीज स्टार्ट। जी सर। Good afternoon, everyone. Today I'm going to take block 3 of personality theories and assessment. And yesterday we discussed the outer framework of personality. Today our focus will be on the theories or the trait approaches given by different personality theorists and to know more about personality. So the first personality theorist that I'll be talking about is Jordan Allport. And you must have read his definition in one of your lectures that was taken before. He defined personality as a dynamic organization within the individual. So dynamic means it is ever changing. But at the same time, he believed that the personality is dominated by three levels. And those three levels are defined as traits. So traits can be cardinal, 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 central, Central, and secondary. So this classification was particularly given by Allport when he was to define personality. Also, he has given many other concepts that we will be talking about in in this session only. So the name cardinal itself, something dominating, something particular that the person is defined by, which is not generally present in everyone. So, not the temperament, but few traits are certain that are being recognized in an individual, and the person gets the recognition because of that trait. For example, Mother Teresa. Now, she's being recognized because of her altruistic behavior. So, she had that cardinal trait. So, they are considered as individuals' passions, right? They are powerful, and maximum of the personality is dominated by such traits if it is properly developed in your personality. Now, at the same time, our personality is composed of other traits also, which we call them as central traits. Now, they are commonly found in every individual has certain kind of central traits. Now, they are in the hierarchy actually, depending upon the degrees. For example, a central trait of loyalty, kindness, honesty, generosity, agreeableness, friendliness, wildness, or grouchiness. So these are the central traits which are common in all, right? Now they are the basic building blocks and that try to shape our most of the behavior. Now the third level that Allport defined was the secondary traits. Such kind of traits are not generally visible on the public front, and they are visible or they come onto the surface only when you are in a situation that demands to have such kind of traits. So they say they lie at the bottom of the hierarchy. They are not quite obvious or consistent, and they are aroused under particular situations. For example, a friendly person gets angry when any one of his friends try to provoke him. So generally, he is a very good, very nice tempered person. लेकिन particular situation में when somebody is trying to provoke him, he might get angry. Or for example, a person who has a fear of public speaking. So he's otherwise a very gentle person, but he gets panic when he is being asked to deliver a lecture on a podium. Now, Allport hypothesized that along with the traits, there are certain forces that govern the personality. Those forces were further classified into internal forces and external forces.
Internal forces were named as genotypes, Genotypes. Now, these are the internal forces that relate to how a person retains the information and uses it to interact with the world. Maybe your schemas. I mean, we have been talking about this particular word over the number of lectures. The schemas were what? Cognitions, internal mental representation. So what if I say an apple? Maybe what if I say loyalty or honesty? So you are remembering the honest person. If I say helpful behavior, so you will immediately recollect Mother Teresa. Or if I say Mother Teresa, so you are going to relate the information of helping behavior with Mother Teresa. Another force that I called it as external force is phenotype. Phenotype. Now, this phenotype, these are the external forces that relate to the way an individual accepts his or her surroundings. So, particularly, I'm talking about the environment, that how the particular surroundings influence the behavior of the individual is also important while shaping the personality. Why? Because personality is dynamic. We learn from our experiences, from our daily routine activities. So these external forces play a very important role. Now we have discussed the traits also, cardinal trait, central trait, secondary trait. We have also discussed that Allport talked about the forces, external force, internal force, named as genotype and phenotype. Then he also believed that maximum of the human behavior is motivated by something very different. That is the way you express yourself. So that's called as appropriate functioning. हम appropriate बोलते हैं. अगर आप वहां से A और P हटा दें तो appropriate functioning. PROPRIATE. Appropriate functioning. We also call this as propium. PROPIUM. He says most of what we do in life is a matter of being who we are. So the way I am, I'm going to behave like that. I'm aggressive, I'm going to exhibit my aggressive impulses. I am humble, gentle, humility wala person, gratitude wala. So I am going to reflect that. So basically, he's talking about the reflection with the help of appropriate functioning. Now, appropriate functioning can also be characterized as proactive, future-oriented, and psychological. Now, the self we are talking about, he says the self has two directions. This propium या जो appropriate functioning है, इसके देखे जाएं तो दो directions हैं. और वो दोनों directions जो हैं, एक तरफ तो हमें phenomenal world को लेके जाती है. So we reflect this as phenomenological. The self is guided by two kinds of directions. That is phenomenological and the another is the function. So मैं swap कर रही हूँ words को propium and self. This means the same thing. Now this propium or self, as I said, is guided by two directions. So one I said phenomenological, which means the experience of myself. कैसे मैं अपने self को experience करती हूँ? My immediate experiences. It's not something accidental or incidental. It is essential. Matter of my life. Warm and central. It's not something that I'm talking to be a shortcut route है या peripheral है. Very, very important part of my life. So the way I experience is one direction called as phenomenological. Now, when I say self or propium has the functional direction also, it means that functional direction serves to have 7 kind of functions. Now, self that arises in one's life and having that 7 functions, so out of them, the first is
the sense of body. How do you feel yourself? Physicality. The second function is self-identity. Who am I? The third is self-esteem. Fourth, self-extension. The things I have learned in my life, have I accumulated only, or whether I have applied those things and further extended in my life? Self-image. That's also very important. Rational coping. Now, what kind of strategy I use when I face a problem? Rational, logical, problem-oriented solution, या emotional coping, maybe crying, catharsis, talking to one or the other person. So when you are using the rational approach, a kind of sense of self or the concept is being developed. And the last is appropriate striving. So the सातवां function है self का, that's called as striving. What do you strive for? Many of us will say, I am striving for my own identity. I am striving for to have my goals attained, self-actualization, transcendence stage. I want to live my livelihood. You will say, I'm striving for food, shelter, as per the needs we need. Now, because we are talking about the trait approach of Allport, so we must know how Allport defined trait. So Allport's definition of trait was not something like you can call as an adjective, as we have been studying, loyal, disloyal, honest, gratitude. He says that was something more than that, right? It was particular to that person, existing in individuality, not just कि मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है. So he defined trait as personal dispositions. He says that Allport originally used the word traits, but found that so many people assumed that he meant traits as perceived by someone looking at another person, or maybe measured by personality tests, rather than a unique. So अब उसने कैसे define करा trait को? A unique individual characteristic within a person that he changed it to dispositions. A personal disposition, there can be a question that how would you define personal disposition? So a personal disposition is defined as a generalized neuropsychic structure. Of course, our personality is also governed by biological factors. Certain kind of arousals, cortical arousals, like what if I say that जो introverts होते हैं, they have high level of cortical arousals. Maybe extroverts, they don't have high level of cortical arousals. Why? Because they are cheerful, they are happy-go-lucky kind of persons. So they are able to adjust themselves in a situation, whereas introverts, they might feel some time to get adjusted to a particular situation. So personal disposition is a generalized neuropsychic structure that's particular or peculiar to the individual. ऐसा नहीं है मेरे में भी होगा तो वो आप में भी होगा. A coincidence, of course, there can be, as we say, nothing is absolute, but more or less they are particular to a particular person only, with the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide consistent forms of adaptive and stylistic behavior. What is the meaning actually? I am growing with the time. जो आप स्कूल इयर्स में थे वो आप कॉलेज इयर्स में नहीं रहे. आप जब वर्क प्लेस पे आए, जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी हुई, तो बहुत सारी चेंजेस हमारे अंदर आए और वो चीजें आपके इंडिविजुअलिटी को पर्टिकुलरली डिफाइन करती हैं कि ही इज दिस, नॉट जस्ट कि वो ये भी है वो भी है. तो बोलते हैं बाकी सब ठीक है, एक उसका बहुत पर्टिकुलर सा ट्रेट है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है. लेट्स सपोज, गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, या ही इज वेरी लॉयल, ही इज वेरी डेडिकेटेड. तो वो आप उस पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके पर्सनल डिस्पोजिशन से. नाउ व्हेन यू हैव दैट सेल्फ डेवलप्ड, राइट, हम 7 फंक्शंस की बात कर रहे थे कि 7 फंक्शंस हैं सेल्फ के, एंड ऑल्सो जैसे कि मैं एक्सपीरियंस करूंगी अपने वर्ल्ड को,
तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक स्ट्राइविंग फोर्स डेवलप कर रही है, which means कि gradually you attain the psychological maturity. Because ये लॉकडाउन के दौरान हम घर पे रहे हैं सब, एंड द मैक्सिमम टाइम वाज स्पेंट ऑन मोबाइल, सो बहुत सारे ऐसे मोटिवेटिंग कोट्स या थॉट्स आते थे, कभी कभार पढ़कर तो लगता था दे आर जस्ट फॉर रीडिंग, दे कैन नॉट बी अप्लाइड, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि यस वो हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. सो नाउ मैं साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करने लगी हूँ कि कभी कभार हमें लगता है कि हम छोटे होते कैसे लड़ते थे ऑन पेटी इश्यूज, या कुछ देर पहले, कुछ साल पहले आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते थे. ओवर द इयर्स योर एक्सपीरियंसेस, योर स्ट्रगल हैज गेन्ड एन इंसाइट एंड यू प्रेफर टू लेट इट गो. तो वी कॉल इट एज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी कि भाई तुम यहां से डेवलप हो गए हो कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, ये आपको पता लग चुका है. So they say if you have a well-developed proprium and a rich adaptive set of dispositions, जिनसे मैं जानी जाऊंगी, you have attained psychological maturity. अब psychological maturity के 7 characteristics हैं. First, there is a sense of involvement, right? You have some kind of like participating, you are equally involved, you are putting your things there, I mean you are expressing also yourself. Then you are empathetic, you have trust, you trust people. मिसट्रस्ट नहीं है डेवलप हुआ बिकॉज आपके बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हो, तो आप सोचें कि अब मैं कभी किसी को ट्रस्ट नहीं करूंगा. एम्पैथेटिक, टू बी इन द शू ऑफ द सफरर. You know what it makes you feel like when you are away from your family, right? Then genuineness and the tolerance, the patience. Now the third characteristic is emotional security and self acceptance. साइकोलॉजी काफी हद तक हमें लगता है कि ये चीजें हम जो पढ़ते हैं रूटीन में वो हम सबलिमिनली अपने आप पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. इमोशनल सिक्योरिटी, you have the control on your emotions. You're not governed by your emotions. Self-acceptance, the way I am, unconditional positive regard. Is my voice audible? Just got the message from Sakshi that my voice is not coming. Hello? मैम ऑडिबल है आप? अच्छा सर, एक ने मैसेज छोड़ा है, आवाज ऑडिबल नहीं है. मैम आवाज आ रही है, दोबारा क्वेश्चन आएगा तो. ओके, ठीक है. Now the fourth characteristic of psychological maturity, you have a realistic perception, enough of using defense mechanisms. Now you believe in accepting the things the way they are, right? Rather than suppress करना, repress करना, और उसके बाद के repercussions को face करने के लिए हम फिर से कोई defense mechanism use करें. It is better to accept the things right away. क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका आधा बोझ हल्का हो जाता है. I know I was wrong, so I must accept my mistake. Maybe I threw my anger, or I threw my anger on the boss. I was not feeling good about my relations at home, and वो कहीं ना कहीं एक रूप बन गया and outlet मेरे boss के ऊपर हो गया. There's no harm going say कि I apologize for that. Then fifth characteristic, problem centeredness, the development of problem solving skills. Rather than nagging, rather than complaining, you are developing an attitude of problem oriented solutions, that you work on the deep rooted things and you try to find out the solution. Then self objectification. Okay, the fourth characteristic is realistic perception. Realistic perception. That is, you don't use the defense mechanisms anymore. Now the sixth one is insight into one's own behavior. अपने अंदर झांकना. हम कहीं जब लाइट टॉक्स हो रही होती हैं तो हम जब एक दूसरे के वो
बच्चों की तरह ब्लेम गेम्स खेलते हैं, तो हम बोलते हैं पहले अपने अंदर झांक के देख लो, फिर आप किसी दूसरे को प्रीच करो या सलाह दो. First, you just light up the torch in your own self. So that's called as self-objectification. The seventh characteristic of a psychological maturity is you have developed the personalized conscience or a kind of value orientation, right? Differentiated religious sentiments where you give respect to all the religions. अगर कोई किसी कह लीजिए आप किसी भी धर्म को मानता है या उसको जिस भी तरीके से अपने रिलेशनशिप में खुशी मिल रही है, तो उसमें हम तानाशाही ना करें कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. ओपिनियंस होने चाहिए पर ओपिनियनेटेड इतना भी नहीं बनना चाहिए. सो यू हैव डेवलप्ड दैट कॉन्शियंस ओवर द टाइम. दैट्स कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. Now, these were the seven characteristics of psychological maturity. Now, the next point or the next key concept that was developed by Allport was functional autonomy. Dear, if book has 6 characteristics, I think there is no harm if we are doing something extra than your book. That's why we are conducting these lectures, right? I would request you to stop putting such messages when I am delivering the lecture. You are given enough of the time to ask me whatever you want to. Yeah, please. No need to say sorry, but please make it sure you all are grown up. We are not kids. We are not having kindergarten class here. So no matter आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 है, 4 हैं, मुझे अगर कहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा कराना आपके फायदे में आएगा, तो एक्सेस में एक्स्ट्रा में कराई हुई चीज विद्या कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ये हम सबको पता है. तो आज कुछ अगर नया सुनने को मिला वो अपने आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए. यही अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की. हाँ, कुछ छूट जाए तो देन ऑफ कोर्स यू शुड लेट मी नो कि ये रह गया है, तो फिर हम उसका देख सकते हैं. Now the another key concept is the functional autonomy. And right now, sorry, अभी मैं फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ. You must carry a pencil, pen or a paper or a copy. You should not have those IGNU study material books right now. You just jot down what I am speaking और जो भी आपको समझ आ रहा है अपनी लैंग्वेज में. That will help you to go through the study material. Otherwise, there's no point of having online classes. हमें बुकिश नॉलेज के कुछ एक्स्ट्रा लेना है. So coming back to functional autonomy, now Allport didn't believe in looking into too much of the person's past. कभी कभार हम बोलते हैं कि okay, if I talk about the relationships only, because we have, I work as a relationship counselor also for adolescent students I have in my college. So अक्सर ऐसे बच्चों को दिक्कत आता है, they say, ma'am, his or her past is not that good enough. कि मैं नहीं सोचती हूँ मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊं या कंटिन्यू करूं, या मुझे पता लगा कि वो पास्ट में ऐसा था. बट देन यू नो, everyone should be given a chance to grow, to realize and to work upon his or her mistakes, if mistakes they are to be called as, because हमें लगता है कि situations होती हैं जो इंसान को उस तरह से behave करने को कहता है. So Allport believed कि you must have that autonomy, that freedom, right? It doesn't matter, for example, that why you wanted to become a doctor or why you developed the taste for olives. Acha, why doctor? Why not engineer? It's okay ना, that's your life. So वो एक free will concept जो है हम अपने history of psychology में पढ़ते हैं, वो होना चाहिए. वो अभी मुझे लगता है बहुत हद तक हमारी population में इतना नहीं हुआ है oriented, but that's okay. If someone is happy having a different kind of orientation for a kind of a relationship or for specific taste for particular movies, that's okay. We don't have to dig down into it. Why is that so? Now, functional autonomy also have 2 flavors. तो flavors की बात करी है तो कुछ perseverance की बात करी जा रही है. The first flavor is perseverance. This refers essentially to our habits, behaviors that no longer serve the original purpose but still continue. जैसे कि you started smoking as maybe an adolescent rebellion attitude.
ओ आई एम अ ग्रोन अप बॉय नाउ, आई एम अ टीनेज बॉय, तो कुछ तो डिफरेंट करना है ना। टीनेज में जब टीनेज पीरियड होता है तो बच्चों में ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं इन बोथ द जेंडर्स। सो मे बी एक बच्चे को, लड़के को लगता है कि यू नो मैस्कुलिनिटी प्रूव करना है तो आई मस्ट स्मोक, बट नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ यू स्मोक बिकॉज यू कांट क्विट। और अगर हम ये लिकर पे ले जाएं, अल्कोहल पे ले जाएं, कहते हैं जी शराब छुड़ाने के लिए लेके आए हैं, शौक शौक में पीनी शुरू करी थी और पता ही नहीं लगा कि कब इसकी आदत बन गई। दैट्स दी परसिवेरेंस फंक्शनल ऑटोनॉमी। ओरिजिनल कोई और, ओरिजिनलिटी पे देखा जाए तो रीजन कुछ और था, बट नाउ इट हैज बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स एज अ हैबिट। इवन फॉर एग्जाम्पल सम रिचुअल्स, जैसे हम कोई स्नीज करता है या खांसता है तो हम बहुत सारे, हर एक अपना अपना है, कोई बोलता है गॉड ब्लेस यू, कोई कहता है तुम्हें कोई याद कर रहा है। सो दिस ब्लेस यू वर्ड, यू रियलाइज के अच्छा समवेयर दिस ब्लेस वर्ड वाज कोरिलेटेड। जब लेट्स सपोज अभी हम कोरोना की बात कर लेते हैं, मैं प्लेग की बात क्यों करूं, what is this Mahima is presenting? Is everything fine? Yes, ma'am. Okay. So अगर मैं ये अभी कोरोना की बात करूं तो दिस मोदी जी की जो ये क्लैपिंग अपलॉडिंग जो था हेल्थ वर्कर्स के लिए, राइट, एंड बर्तन को कहीं ना कहीं से एक्सप्रेस करना जो था जेस्चर को, नाउ दिस शायद हमें हमेशा के लिए याद रहेगा कि तब हमने अपने घरों में जो वाइब्रेशंस पैदा करी थी या जो अपलॉडिंग या क्लैपिंग करी थी, वो हेल्थ वर्कर्स को थैंक्स गिविंग का जेस्चर था। सो आई गेस नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू सर्व एज परसिवरेंस फंक्शनल ऑटोनॉमी। कैसे कि जब भी कहीं कुछ कोई हेल्थ वर्कर ठीक होगा या हेल्थ वर्कर से कोई पेशेंट जो बहुत ज्यादा कह लीजिए आप बिल्कुल डेटेरिएटिंग कंडीशन में हो और वो ठीक होके आएगा, तो आपको वो याद आएगा कि ओके हमें इसके लिए क्लैप करना है या हम इसके लिए कुछ ऐसा ही प्रेजेंट करें, क्योंकि वी आर रिलेटिंग दैट ओरिजिनली इट वाज डन फॉर समथिंग एल्स। और मे बी आने वाले टाइम में बच्चे या किसी कहीं पे भी वो चीज हम अप्लाई कर लेंगे, कहने का मतलब ये है। तो परसिवेरेंस फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है कि आई स्टार्टेड विद सम अदर इंटेंशन बट देन आई डेवलप्ड इट एज माय हैबिट। नाउ appropriate functional autonomy is something a bit more self-directed than habits. सिर्फ perseverance functional autonomy नहीं है, it has something more than habits. What is that? Values. So the another flavor of functional autonomy is values. Now, for example, let's suppose you were punished for being selfish when you were a child. आपने पेंसिल नहीं शेयर करा, आपने टॉफी नहीं शेयर किया, आपने टॉय नहीं शेयर किया. Now, that doesn't in any way distract from your well-known generosity today. अब आपने वो as एक value inculcate कर लिया होगा अपने अंदर. It has become a value now that it's not just कि मुझे share करना है, but I have developed it as a value system. I don't know how many of you have read the Kohlberg theory of development, moral development की. So कोलबर्ग ने भी एक KOHLBERG, अगर कभी मौका मिले आपको उसकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ने का, सो द कंसाइंशियसनेस जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ वो यहाँ पे फिट होता है वैल्यूज में, कि हैबिट से ज्यादा हम कुछ चीजों को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं एज अ वैल्यू सिस्टम, जो कि हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा बेटर हैंड पे रिफ्लेक्ट करता है. Now, after all port, we have curtail. It's not called as cattle. इसकी pronunciation है curtail because CATTELL है. So, I just want to remind it's called as curtail, not cattle. And his full name is Raymond
M-O-N-D, Raymond Bernard, B-E-R-N-A-R-D, Raymond Bernard Cattell. So, American psychologist and one of the leading personality theorists. I think he was the one, not think, he is the one, जिसने पर्सनालिटी के इतने सारे फैक्टर्स को, जो हम इतने वर्ड्स यूज करते हैं, ब्यूटीफुल, लॉयल, काइंड, जेनरस, पता नहीं क्या क्या, उन सबको विद द हेल्प ऑफ वन स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसको हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस, he tried to summarize those so many traits into certain set of factors. और उसको 16 PF के नाम से जाना जाता है, the 16 personality factors. अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ें ऑलपोर्ट का, तो जब ओरिजिनली ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो 4000 traits was he able to identify. 4000 means a lot. And then coming down to 171 by Cattell, and then finally 35, and then 16 personality factors. और वो एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक का नाम था फैक्टर एनालिसिस. ये आई थिंक आप आरएमएस में अपना पढ़ेंगे. फैक्टर, FACTOR, फैक्टर एनालिसिस. I'm just going to quickly name them, those 16 personality factors. I'm sure आपने या तो ये क्वेश्चनर अभी परफॉर्म करना है या कर लिया होगा. 16 PF के नाम से जाना जाता है क्वेश्चनर. So the 16 factors were: 1, emotional; 2, intelligent; 3rd, suspicious; 4th, reserved, assertive, sober, conscientiousness, shy, tender mind, practical, shrewd, self-assured, conservative, group-oriented, undisciplined, relaxed. जैसे Allport defined his trait approach on behalf of 3 levels, okay, there are 3 levels: cardinal, central, and secondary. Here, Cattell classified traits into 4 categories. Common traits, common to all. Unique traits, unique, possessed by particular persons as temperamental traits. जैसे कि your emotional reactions and your energy. So they are distinctive, vary करेगा person to person. Surface traits, the overt manifestation, ग्लास के surface जैसे आप ले सकते हैं, कि जो ऊपर उभर के नजर आते हैं. Your curiosity, your tactfulness, your dependability. And finally, the source traits, the root of our deep-rooted personality. Now, they are the structures or sources that determine behaviors such as emotionality, the kind of domination I have. Now, these traits, they cannot be seen directly or externally in the behavior of an individual, right? Why? Because they are deep-rooted. And they will come into existence in particular situations again. Now, as I said, Cattell, he postulated a formula for that factor analysis. Maybe it's not that necessary for you to know, but उसने कैसे वो factor analysis से 16 factors निकाले थे, उसका एक formula उसने दिया था, जिसमें वो response is equal to stimulus word plus trait word, then plus S2, ST, T2, ऐसे करके एक पूरा formula है. That's given in your book if I'm not wrong, or you can find it out on the Google. So the S was the importance of the trait for that response. If I say reserved, तो T हो गया मेरा source trait reserved, right? And S is मैं कितना importance उस reserved word के साथ जोड़ती हूँ, क्या rating देती हूँ, 1 देती हूँ, 2 देती हूँ, 3 देती हूँ on a 5-point scale. So this is how we determine कि हाँ, the person is high on reserved factor, high on shy factor, or any other factor. In order to apply that factor analysis, now Cattell believed we need to have 3 kinds of comprehensive sampling. तो उसने 3 तरह के personality dimensions को capture करने के लिए 3 ranges निकाल दिए. 3 ranges: L,
L for love, L data, experimental data, जिसको T data बोलते हैं, T for toy. So first is life data, L data, experimental data, that's called T, and the third was the questionnaire data, Q data. Now the life data involves collecting data from the individual's natural everyday behaviors, measuring their characteristic behavior patterns in the real world. For example, this could range from number of traffic accidents, number of parties attended each month, to any kind of illness or the divorces. The experimental data. Now, this kind of data involves the reactions to the standardized experimental situations created in a lab. आपको lab में बुला के मैंने आपके ऊपर कोई experiment या test लगाया हो और मैं वो data आपका procure करूं. So this experimental data I can objectively observe and measure. Very easy for that. पहले वाला जो था वो थोड़ा subjective था. Now the questionnaire data. Now the questionnaire data, the kind of questionnaires we use. What do? I try to introspect myself and fill out my form. Yes, I'm like this. I'm like this. Yes, no, or any other kind of the rating scale has been given. So it involves responses based on introspection by the individual about their own behavior and feelings. So now once we have done Allport and Cattell, we are switching over to the type approach. अभी तक हम trait approaches पढ़ रहे थे, अब हम type approach के towards जा रहे हैं. अब हम जब type approach को study कर रहे हैं, तो we have to make a connection between the your body type and your temperament, because we must know कि कभी कभार हम लोगों को, because we call personality as a mask approach and a substance approach, and then at the same time we say he's very tall. तो वो tall है तो हमें हल्का सा ऐसे लगता है aggressive भी होगा, impulsive भी होगा. Short है, क्या करेगा, उसकी height ही नहीं है. हम ऐसे characteristics के साथ person की personality को identify करके define करते हैं. So apart from this joke, the first constitutional आप कह सकते हैं system जो body का propose किया गया था, that was done by William Sheldon, and he defined body types into 3 categories. First was endomorph, ductless glands भी बोलते हैं इनको, DUCTLESS. So first is endomorph, second is ectomorph, third is mesomorph. So the ectomorphs are thin with a small bone structure and very little fat on their bodies. Now these kind of persons, they enjoy intellectual stimulation and feel uncomfortable in social situations. So they are not that adaptive in social situations. Now mesomorphs. They have large bone structure, broad shoulders, narrow waist, and attractive, strong bodies. Now, they are very curious. They enjoy trying new things and can be obnoxious or aggressive at some time. Further, going on to another classifications, I've explained endomorph and mesomorph. You can see the ectomorph in your study material because we are rushing by the time. So Hippocrates also gave one kind of a type approach to define personality. He says body humors, the kind of fluid the person carries, define the personality. So he defined personality type as sanguine, 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 choleric, melancholic, and phlegmatic. Phlegmatic spelling PHLEGMATIC, phlegmatic. So depending upon the kind of fluid or the body humor they have, they define the personality accordingly. Apart from Hippocrates and William Sheldon, we also have certain personality theorists that have defined personality into types.
For example, extroversion, introversion. And the key role playing was Carl Jung. Jung spelling Jung. J is silent, so we call it as Jung. Carl Jung. Now he has given different concepts like extroversion, introversion, archetypes, and this was from Jung's theory that there was a particular type of test developed that has been named as Myers-Briggs type indicator. तो यूंग ने जो टाइप्स दिए थे वो थे एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन. फर्दर ही बिलीव्ड कि जो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन है इसके साथ 3 और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को जोड़ा जा सकता है एंड इन ऑल टुगेदर ही फोकसेस ऑन 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस. नंबर 1, extraversion versus introversion, sensation versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceiving. Now, Jung's theory led to the development of a very famous kind of an indicator called as Myers, M-Y-E-R-S, Myers-Briggs type indicator. Briggs, B-R-I-G-G-S. Yes, Shaina, they are called as black bile, yellow bile, blood, and phlegm. Right. The Hippocrates theory. Right. You're right. So this Myers-Briggs type indicator is functioning very well in today's time. आजकल maximum personality test जब हम करने लगते हैं तो we make use of this Myers-Briggs type indicator. This is actually the adaptation of the Carl Jung's theory only on personality. And this Myers-Briggs type indicator tries to understand the unique personality of an individual. Right? So with the help of this Myers-Briggs type indicator, we try to find out the kind of preference a person has. So do you prefer to deal with people and things? Yeah, you believe in facts and reality. You believe in logic and truth, or a lifestyle that is well structured, or you just go with the flow. So that really helps us to identify the personality pattern. After discussing Jung's type, we cannot ignore the role of Hans Eysenck, another personality theorist. H-A-N-S, Hans Eysenck. E-Y-S-E-N-C-K. So he developed a very influential theory of personality, and he finally identified that there are 3 factors of personality: extroversion, neuroticism, and psychoticism. In research work, हम बहुत सारे लोग जो research work में जाते हैं और अगर हमने कहीं personality as a variable लिया हुआ है तो इसके जितने भी revisions हैं Eysenck के personality को लेके हम अक्सर इसके टेस्ट को यूज करते हैं. EPQ कहा जाता है, Eysenck Personality Questionnaire, and different revisions have been made. Now, each of the Eysenck theory factor is actually a bipolar dimension. मतलब एक के साथ उसका opposite dimension भी exist करता है. For example, extroversion versus introversion, neuroticism versus emotional stability, psychoticism versus self-control. I want to make a point here. Okay, when I'm saying psychoticism in Eysenck personality theory, so we have to be very sure कि मैं psychoticism को from clinical psychologist point of view नहीं use कर रही हूँ, क्योंकि clinical psychologist के point of view से it is mental illness. Right now here from Eysenck point of view, psychoticism is just an antisocial behavior, right?
So extroverts जो होते हैं, they are relatively more outgoing, gregarious, sociable, openly expressive. अगर introverts के characteristics की बात की जाए तो they are quiet, reserved, withdrawn. They tend to mute their expression. They don't want to express it. Then if I'm talking about neuroticism, they have high level of emotional instability. बहुत जल्दी worry, बहुत जल्दी anxiety, बहुत जल्दी panic हो जाते हैं. And they are prone to psychological distress. They are moody, they are restless, anxious. Then emotionally stable, they have consistency in their emotional reactions. कभी कभार हम किसी के लिए बोलते हैं भी उसका मूड जो है अनप्रिडिक्टेबल है, अभी हंसी मजाक कर रही है, पता नहीं लगेगा कब किसी बात को बुरा मान लिया. So they are like unstable features, neurotics. And we all are, I must tell you, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ऐसा नहीं हम बोल सकते कि we all are abnormals and we all are normals. There is a, कह लो आप continuum है. Maybe something मेरे लिए जो normal है वो आपके लिए abnormal हो, या आपके लिए abnormal है वो मेरे लिए normal. Now, emotionally stable people, they are even-tempered, they are calm, they have leadership skills, they are carefree. Psychoticism, जो कि मैंने अभी बोला antisocial behavior depict करते हैं. So they have characteristics of aggression, impulsive है, and of course, क्योंकि clinical psychologist के point of view से इसको illness कहा जा रहा है, तो they have that vulnerability या susceptibility to psychosis या फिर psychopathic disorders को वो जल्द develop कर सकते हैं, क्योंकि वो borderline एक edge पे exist कर रहे हैं. Then we also have psychoticism versus self-control dimension. No? So self-control, for example, they are calm, thoughtful, and also considerate. Now, as I said, मैं शायद कुछ theories पहले जब discuss कर रही थी तो मैं कह रही थी personality के ऊपर biological factors भी अपना important role play करते हैं, और उसमें हम cortical arousal की बात कर रहे थे और hormonal levels की बात कर रहे थे. And they play an important role along with the environmental factors. For example, behavior learned through conditioning influence a person's score on any of these personality dimensions. अगर मैंने कुछ चीजें अपने learning environment से learn करी हैं, तो शायद इनका असर मेरी personality के ऊपर ज्यादा होगा. Maybe I have learned to be like, to act like an extrovert. I have learned from a situation कि मैं introvert बन गई हूँ, क्योंकि situational determinants तो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं ना. So now the role of biological factors is that extroverts, they experience lower levels of cortical arousal, and introverts, they experience the higher level of arousals, and that may further lead to increase in arousal. Apart from biological factors that we have discussed in Ising theory personality, we cannot end up the theories of personality here only, because we have one more that's called as Big Five personality. So nowadays, the young researchers, they are preferring the different versions of Big Five personality inventory, and different names have been given. It's also called as 5-factor model, and it is also known by an acronym called as OCEAN, OCEAN, क्योंकि O का भी मीनिंग है, C का भी मीनिंग है, इसमें E का भी है, A का भी है, N का भी है. So जो ट्रेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे के सारे इसको बिग 5 का नाम दिए गए हैं. Now the ocean का O represents openness to experience. So nowadays we use this inventory to identify or to measure personality of an individual. Now when I'm saying openness to experience, it means curious. Of course, cautious you are inventive kind of a person. Then C for conscientiousness. Conscientiousness, efficient, organized. Then third, extroversion. Extroversion, outgoing, energetic, or you are kind of a solitude person जो personality है या reserved है. A represents agreeableness,
Agree से agreeableness. You are friendly, you have compassion, or you are challenging. And then neuroticism. N represents neuroticism. You are sensitive, you're nervous, or you are resilient and confident. So these 5 factors are represented using the acronym called OCEAN, or it is also called as CANOE, CANOE. हम OCEAN भी बोलते हैं इसको और CANOE भी बोलते हैं. So when I say openness to experience, so for example, if I say, I have excellent ideas, I'm quick to understand things, I use difficult words, and I'm full of ideas. So you have maximum exposure, it means. So openness to experience represent ये करता है. Now conscientiousness. Now this is a tendency that you display your self-discipline, right? You act dutifully, you strive for achievement. For example, I am always prepared. I don't need any extra time to prepare or need some kind of mental preparation for that. I'm a very spontaneous speaker. Or I pay attention to details. I know किसको importance देना है. Extroversion. For example, I'm the life of the party. मेरे बिना पार्टी अच्छी लगती ही नहीं किसी को. I don't mind being the center of attention. Or I feel comfortable around people. So you have that energy creation powers from the external sources. You enjoy interacting with people. You are enthusiastic, active oriented hai. Agreeableness. For example, I'm interested in people and I also sympathize with others' feelings. So you have that individual, you have that general concern for social harmony. You equally get along with others. You are considerate, you are kind, you are trustworthy, helpful. Optimistic view रखना अपने आप में. Neurotics, they get easily irritated, stressed out, easily upset for no reason. They have anger, anxious, depressed, and that's why they are called as they are emotionally unstable. So now when we know कि इतने सारे traits हैं, types हैं, factors हैं, body fluids हैं, right? Apart from all these things, हमने biological factors discuss करे थे अभी. We cannot ignore the role of genes. But at the same time, let me tell you, कोई भी single gene determine नहीं करेगा आपकी personality को. There's no IQ gene, I must say this, जो हमारी intelligence को determine करेगा. और on a lighter note मैं बोल रही हूँ, there's no good marriage partner gene that makes a person a particularly good marriage bet. So even working together, genes are not so powerful and they cannot control or create our personality. We always need the environment, the surrounding. हाँ, some genes जो है कुछ ऐसे होंगे, they tend to increase a given characteristic and some of them they tend to decrease that same characteristic. And finally we have a different kind of outcome. You have that gene, but of course let's suppose आपके अंदर वो एक particular gene है parents के through आ गया, लेकिन आपको आगे environment ऐसा नहीं मिला. You are vulnerable, but because आपको situation ही ऐसे नहीं मिली तो वो वहीं का वहीं suppress रह गया. So genetic factors, they always work with environment factors to create personality. For example, a person may have a genetic variant that is known to increase his or her risk for developing a kind of आप कह सकते हैं inclination for smoking. But again, that person never smokes because उसको environment ऐसा मिला नहीं जिसमें वो उसकी inclination further habit बनती, या वो एक first time कह लो आपने smoke करा and then वो एक उसकी habit बन गई.
सो वल्नरेबल हम सब होते हैं, हम इसको डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं अगर हम क्लिनिकल टर्म्स में बात करें। तो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल यही डिपिक्ट करता है कि वी ऑल आर वल्नरेबल, बट देन जैसे हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि हमारे सबके अंदर जो हमारी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं वो सब ऐसे फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। बट कभी कभार अगर सिचुएशन हमें वैसी मिल जाए तो हो सकता है इम्यूनिटी फाइट करते करते लो हो जाए, जिसके कारण हम वो प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं। So this nature nurture controversy is always there. It is a debatable issue. But then कुछ चीजें हमें heredity के थ्रू मिलती हैं and कुछ चीजें जो है वो हमें environment के थ्रू मिलती है, and this is how we grow and our personality becomes dynamic. So I end up my lecture here. Now I'm going to see your messages. Recording is not uploaded on FB. ये कल का मैसेज है, कल के लिए. I guess you need to talk to your coordinator for this. मैम कल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, टेक्निकल रीजन से वो उपलब्ध नहीं रहेगी बच्चों को। अच्छा ही. तो अदरवाइज तो सर वी हैड स्टूडेंट्स ना, पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने सुना तो होगा। जी जी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। मैं तो इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब देखिए पीपीटी का माध्यम जो है वो सिर्फ इसलिए होता है कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स के लिए इजी हैं उनको गो थ्रू करना। कभी कभार मेरा एक्सेंट ऐसा हो सकता है कि कई शब्द नहीं समझ आते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कॉपी, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने पास कॉपी, नोटबुक, पेन जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं। तो you have to jot down certain points. Then the another question is, yes, a person can an individual dominate only one trait? Depends again person to person. Conscientiousness is tendency to display. See, it's not just to display, but maybe to feel it. अगर आप फील कर रहे हैं, आपने इंटरनलाइज करा है, कंसाइंशियसनेस एक इंटरनलाइज्ड फैक्टर है, आप उसको डेवलप करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स वो आपके बिहेवियर से डिस्प्ले में आएगा डेफिनेटली. Is it compulsory to write educational implications at the end of the particular theory? No, not necessary. Please explain nature versus nurture bit more. See, nature versus nurture is I think a school level question. हर बार जब आप developmental theories भी पढ़ते होंगे, तो जब आपकी प्रीनेटल और पोस्टनेटल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कहीं कहीं हेरिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर एट द सेम टाइम हम एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स की आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट जो था वो डिप्रेस्ड रहा है, हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, बट वो बच्चा आगे अडॉप्ट किया गया है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर वो जीन्स जरूर पाए जाएंगे, बट अगर उसको एनवायरनमेंट हेल्दी मिलेगा, कोहेसिव मिलेगा, तो वो शायद उस बॉर्डर लाइन पे वो ना डेवलप हो. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, नेचर वर्सेस नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तो ये इक्वली रोल प्ले करते हैं. हम दोनों को ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ एनवायरनमेंट जरूरी है या सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है. Okay, thank you so much. Would never miss your lecture. Ma'am, I haven't, okay, this, I don't know what about the books you are asking, ये आप सर से पूछ सकते हैं. Cortical arousals जो है हमारे जो बायोलॉजिकल या न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस की जब बात करते हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन में कुछ हमारे रीजन्स हैं. अगर हम if I get a chance to have some lifespan classes with you, I will explain you elaborately in that. अभी के लिए आप cortical arousal जो हैं आप उनको chemical processes के तौर पे समझें जो हमारे बॉडी में exist होते हैं. जैसे कि आपको अगर स्ट्रेस है तो कुछ हमारे ब्रेन के रीजन्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल मेडुला है. सो हमारे अंदर बॉडी में प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण हम सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करते हैं, या फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं. तो ये जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं इन सिचुएशंस को डील करने के लिए, राइट?
सो जैसे कि मैंने बोला कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं उनके अंदर लो लेवल है कॉर्टिकल अराउजल का। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी हैप्पी गो लकी पर्सन। इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है उनके ऊपर कि ओ माय गॉड, ग्रुप ऑफ 10 पीपल, हाउ विल आई एडजस्ट इनटू दैट। बट अगर वही आप इंट्रोवर्ट ले तो उसका पर्सनालिटी बिल्टअप ऐसा हुआ होता है कि इंटरनल मैकेनिज्म्स में भी बहुत ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस लेके बैठा होता है, जिसके कारण internal processes are regularly secreting cortisol, which can of course have an adverse effect on health. कैसे? Person develops ulcers, या अब वो जो मैक्सिमम केमिकल निकला है बॉडी में उसको कोई ना कोई, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में एसिमिलेट हो रहा है तो कोई ना कोई उसने रूप लेना ही है, तो कैन डेवलप डिफरेंट pathologies in your body. Then share today's lecture too. Okay, conscientiousness is the higher level of stage you develop. जरूरी नहीं है कि you will be 60 years old only then you are going to develop this kind of conscientiousness. मतलब awareness, your regulation, खुद के बारे में जानना है, एक enlightenment वाली stage. जैसे हमारे घरों में हमें ये सिखाया जाता है कि you need to follow a guru. Once if you need to follow a path, उस path को follow करने के लिए एक गुरु होना बहुत जरूरी है. सो हमें लगता है कि हम वो खुद अपने आप में भी एनलाइटनमेंट लेके आ सकते हैं, इंसाइट लाना बेसिकली इफ वी फॉलो सर्टेन थिंग्स। जैसे बुद्धिज्म के कुछ रोल्स हैं, या दलाई लामा बोलते हैं कि हैप्पीनेस अपने अंदर है, बाहर हम ढूंढते हैं। तो वो कंसाइंशियसनेस होना, छोटी छोटी चीजों को लेके जो हम बिकर करते हैं, अपना एंगर रिपेल करते हैं। सो व्हेन यू हैव कम आउट ऑफ दैट, हम कहते हैं ना, अब हमें उन छोटी छोटी बातों में कोई वो नहीं रहा है। आई हैव डेवलप्ड माई साइकी इन दैट वे कि मैं चीजों को ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखती हूँ। दैट्स कॉल्ड एज कंसाइंशियसनेस। कटेल के 3 रेंजेस आर रिलेटेड टू व्हाट? व्हिच 3 रेंजेस? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। ठीक है सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू जी डॉक्टर सर, साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है सर, ओके जी, ओके, बाय बाय। ओके बाय। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, एक फीडबैक का फॉर्म का लिंक मैंने डाला है, तो जिन्होंने पहले नहीं इसको फिलअप किया है वो कृपया अपना रिस्पॉन्स जरूर भरें। और अभी 4 बजे हमारी दूसरी कक्षा भी है, तो आप लोगों ने उसमें भी आना है। अभी आप 20-25 मिनट का समय है, थोड़ा सा मूवमेंट कर ले, कुछ खा पी ले, फिर मिलते हैं 4 बजे। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर।